morning, friends. I hope you are doing well for your preparation of upcoming mains examination and other state PCS examinations such as BPSC. So, we were discussing the economics in this series, and let's continue the series with the union budget. So, let us discuss the important terminology and what are the important concepts that are being asked in the union budget. So what is a union budget, friends? Union budget क्या होता है? How government of India creates budget for different kinds of functions, policy formulations and various activities in its day-to-day life for the coming fiscal year. So budget is a statement of revenue expenditure and the capital expenditure as well as revenue receipts and the capital receipts. Okay, and budget is provided under article 112 of government of India. So whenever you study the budget from the documented source of government website, you will see that budget has been provided under article 112 as annual financial statement. So there is no such word as budget, rather annual financial statement. So it is called as AFS. Budget is annual financial statement. So we will look around what are the important features of this budget. It includes the consolidated fund of India. It includes the uh, under article 114.3 we see the constitution declares that no money can be taken out of the consolidated fund. So there are two funds, consolidated fund and contingency fund. Contingency fund is made for the emergency situations such as war, external aggressions, rebellions and financial failures that was used in 1990s. So consolidated fund is used under article 114.3 and article 112 of the Constitution of India. So it provides India it provides the ministry that no one can take out any money out of the pocket of government without the approval of Lok Sabha. Remember, it is not the ministry but entire Lok Sabha will be the authoritative body over the consolidated fund of India. कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया को कौन रेगुलेट करेगी? लोकसभा। किस आर्टिकल के थ्रू? आर्टिकल 114 3 114 and 3 and 112 under the budget statement or under the permission of President of India to meet the expenditures. Then there is contingency account and there is public account. So as we see, consolidated fund, contingency fund and public account of India. Public account consists of receipts and payment which are in form of our deposit account with the government such as provident fund and small saving funds. So what is the budget? Budget is India's first citizen first. It was the statement in the union budget. At the 75 years of India's independence, it was named as Amrit Kal budget. से आप याद रखेंगे अमृत काल बजट 2023-2024. Now let us go ahead. These are the key numbers in the revenue receipts and capital receipts in this year which are not necessary so far for the exam. So what is provided under article 112? So it provides that the budget is made for the annual financial statement. It was first budget made in 1860. I will also provide the name of the person who made it. So every year we saw the 1st of February. हर साल 1st February को क्या होता है? बजट आपके सामने प्रस्तुत हो जाता है. Even before 1st February, 31st December को. Although it was earlier from 1st April to 31st March was the fiscal year. तो पहले से क्या प्रथा चली आ रही थी? That 1st April to 31st March के बीच बजट को बिल्ड किया जाएगा and that is for a
फाइनेंशियल ईयर, एक फाइनेंशियल ईयर के लिए बजट बनाया जाता है. ओके. So budget contains estimates of revenue, capital receipts, ways means to raise the revenue, estimates of expenditures. तो बजट क्या क्या इंक्लूड करता है? रेसिट्स को, एक्सपेंडिचर्स को, and ways and means to enhance the government expenditure for the policies and schemes that are made in the country for the development of social sectors and infrastructure and education and so on. Many sectors are there. So it details the actual receipts. Budget क्या करता है? Budget gives the actual receipts and expenditure of the closing financial year, reasons for any deficit surplus in the year. जो भी डेफिसिट या सरप्लस के रीजंस हैं उनको एक्चुअल रेसिट्स और एक्सपेंडिचर के फॉर्म में ये शो करता है. पूरे अपकमिंग ईयर के लिए एक पूरा वही खाता बनाया जाता है. दैट इज द टैक्सेशंस, प्रपोजल्स, prospects of revenue, spending programs and introduction of new schemes and projects are included in the budget. तो यूनियन बजट 23-24 में क्या कौन सी चीज़ें खास रही? तो मैंने पहले बताया ये क्या था, अमृतकाल, आज़ादी का अमृतकाल एट द रेट ऑफ 75 ईयर्स ऑफ इंडियाज़ फ्रीडम. तो इसमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 7 प्रायोरिटीज़ को लिस्टेड किया. फर्स्ट गोज़ फॉर इंक्लूसिव डेवलपमेंट, दैट मीन्स डिसेंट्रलाइज्ड ग्रोथ एंड इंक्लूजन ऑफ वेरियस small sectors in the budget, every sections of the society, and panchayati raj institutions also. It comprises village economy, tribals economy, and environment sustainability also. Therefore there is a green growth concept. And second is the reaching last mile. Last mile is people sitting at the distantly located rural areas, in northeastern areas, Andaman and Nicobar, or sitting in the local level at village level people. That is last mile connectivity. And it also includes the youth power, people who are getting to become a youth from teenager. So budget provides Pradhan Mantri Kaushal Vikas Yojana PMKVY for skill development. So we already have NSQF, National Skill Quality Framework. NSQF provides the skill development program at the college level, university level, as well as the industrial level through certification and enhancing the skills at the technical levels. So as people should get re-skilled in new technologies, new instruments, and so that they can take part in the inclusive development and play a role in the industrial growth of India. So India is now moving towards manufacturing based economy. Earlier it was consumption based. Now the fourth part is the financial sector development. Financial sector development provides for the technological driven financial inclusion and strong public finances to robust financial sector. Financial sector includes banking, non-banking financial companies, है ना? And it also includes the rural sectors, small development banks, regional rural banks, in such way which needs improvement through the measures of government of India. Then fifth point goes for infrastructure and investment. So infrastructure in terms of roads, railways, ports, airports, and waterways, seaways. ये सारे क्या हैं आपके इंफ्रास्ट्रक्चर्स में आते हैं, इंक्लूडिंग द अर्बन डेवलपमेंट, रूरल डेवलपमेंट, sanitation facilities. So for that matter 3.3% of GDP has been allocated
and around 10,000 crores of funds for the significant boost of economy and creating the new form of job opportunities. It also enhanced the unleashing potential in the capital investment, enhancing the growth of potential job sector and startups development. So we have Startup India and Stand Up India. So उसके ग्रोथ के लिए क्या किया गया, 33% ऑफ कैपिटल इन्वेस्टमेंट प्रोवाइड किया गया. Then comes the green growth. As we know, environment friendly mechanism has been developed by Government of India. India is engaged in International Solar Alliance. For green growth, we have life, that is lifestyle for sustainable environment. We are also following sustainable development goals, and we are also providing the protection to the wildlife, Ramsar sites, mangroves, forests, trees, so that the biodiversity should be keep conserved at par with the growth level development. Now moving ahead, so these sectors are working continuously with the government mechanism through the budgetary framework. Also we see some important facts related to the budget. That means first budget was seen in India was through Scotsman James Wilson, who was the person S.J. Wilson in 1860 who provided the first budget of India. फर्स्ट बजट को किसने प्रोवाइड किया, एस जे विल्सन, एंड इट वाज ईयर ऑफ 1860, 18th February. After that, India got the, remember this point, first budget for India, and this is first budget for independent India. When India got her independent on 26th November 1947, we got independence on 15th August 1947, and we form our first budget under the leadership of R.K. Shanmukham Chetty. R.K. Shanmukham Chetty formed the first budget on 26 November 1947. हमने 26 नवंबर 1947 को फर्स्ट बजट फॉर्म किया. इसमें प्रोजेक्ट की गई कि इट शुड बी estimated on the agro productivity because India was highly dependent on USA, UK, foreign nations, and India was importing the wheat and rice. So there was a mechanism to enhance the agricultural productivity. Then comes the parliamentary session of budget, which goes 6 different stages. अब पार्लियामेंट की बात करते हैं, then it takes article 112, 113, 114. So article 112 provides that there should be presentation of budget. At the first stage we saw the finance minister standing in front of you. Nirmala Sitharaman ji was standing, and she is still a symbol of women empowerment, presenting the budget in front of the Lok Sabha. So she presents the budget in the first meet, in which she put forward the proposals which needed and which are planned for the development of education, infrastructure, rural, urban, and different sectors of economy. Sorry. Then at second level we saw the general discussion, in which different opposition members as well as different members of Lok Sabha can raise their question, can ask anything what they do not understand. This stage goes for a longer period. So then comes the scrutiny by departmental committees. After the discussion is finished, the report of budget is sent to the scrutinization by departmental committees. So there are various departmental committees, and these committees have members of ruling party as well as opposition. Ruling and opposition के members दोनों जगह रहते हैं. And then comes the voting on demand for grant. Demand for grants, जैसा कि नेम सजेस्ट कर रहा है, grants जो भी गवर्नमेंट देती है for various sectors, development schemes that are also taken for voting. अब यहाँ पे voting होती है कि कितनी grant होनी चाहिए.
and this grant is taken out of Consolidated Fund of India under Article 114 of Constitution. Now you see the budget has been started passing. So first appropriation bills are passed under Article 114. Appropriate की गई जो bills हैं, जो भी policies या scheme बनानी है उनके लिए bills बनती हैं, वो bills table पे pass की जाती हैं after discussion you see, and there is the passing of financial bill. Then वो bills passed हो जाती हैं and these bills become acts. So many acts are made through these budgetary measures. Then we saw schemes, policies such as LPG जब हुआ था, liberalization, privatization and globalization. In this era we saw there was huge transformation through the appropriation bill and there was passing of financial bill. Then इसे आप याद रखेंगे. So first is printation, second is discussion, third is scrutiny. So it comes PDSVAF. PDSVAF इस फॉर्म में you can memorize it. Mnemonics हो गया. Printation, general discussion, scrutiny, voting, appropriation bill passing, and the finance bill which is passed. In this way budget is completed. So let us see the structurization of budget. Budget comprises of revenue account and the capital account in the pocket of Government of India, that is called the public's body, because we are in democratic structure. Then revenue account comprises of receipts and the expenditure. तो receipts में क्या होते हैं, taxes होते हैं, जो भी टैक्स चार्ज की जा रहे हैं जीएसटी के थ्रू और डायरेक्ट टैक्स के थ्रू, एम्प्लॉयज़ जो भी सैलरीड हैं which are engaged in the public sector, these all comes into the tax by the receipts. Then comes incomes and expenditures, then shows the property and capital which are taxable. Then comes the commodities and services which are taxable by the government. बहुत सारी commodities और services जो आप यूज़ करते हो, agriculture, infrastructure, education, financial services, banking services, these all comes under the taxable norms. Then receipts of non-taxable receipts which comes under the currency and coinage. So currency and coinage किसके द्वारा हो रही है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा, and this is non-taxable receipts. Then comes the interest and receipts and dividends. Now this interest, receipts and dividends are taken again on non-taxable receipts. जो भी interest charged हुई हैं loans पे and whatever dividends that are to be payable, that all are charged on the non-taxable incomes. Then some other things are also included. Then comes the revenue expenditure. Revenue expenditure comprises of general services, police, judiciary and defense mechanism. It also comprises of social and community services such as education, medical services, employment services, जो भी गवर्नमेंट के साइड से पब्लिक को दी जा रही है. Expenditure comprises of economic services in terms of agricultural services, industries, transportation and trade also. Industries comprise of micro, small and medium enterprises and every kind of heavy and medium enterprises. Then transportation, in which roads, railways, ports, airports, all such kind of transportation is added. ट्रेड क्या हो रहा है, जो भी ट्रेड गवर्नमेंट के द्वारा किया जा रहा है विद द फॉरेन, जैसे अभी देखा आपने राफेल की परचेजिंग की गई है ना, ड्रोन्स की परचेजिंग हो रही है. सो दिस ऑल ट्रेड्स डन बाय द गवर्नमेंट इन टर्म्स ऑफ एक्सपेंडिचर्स. तो these are considered under the budgetary mechanism in revenue account. Then comes the capital account. What is capital account? That forms long-term investment. Forming capital. Long-term investment में क्या हो रहा है? Net recoveries and loans, advances. Then comes
द नेट मार्केटिंग एंड बोरोइंग, जो भी मार्केट से बोरोइंग हुई है सेबी के द्वारा, और गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ और बॉन्ड्स को सेल करके जो भी चीज़ें निकली हैं वो मार्केट के अंदर आएंगी। नेट स्मॉल सेविंग कलेक्शंस, जो सेविंग्स एंड कलेक्शंस हुए हैं स्मॉल इंटरवल्स from the small savings in the banks in parts of Kasata and others are there. So these are receipts in terms of capital which forms long term. याद रखिए जो long term investment होंगे these all are termed under the receipts. And then comes the expenditure, loans to states and union territories. Expenditure कहाँ पे लोन दिया गया है किसी स्टेट को, किसी यूनियन टेरिटरी को, और एनी सेमी गवर्नमेंट बॉडीज, these are all comes under expenditure of the government under capital expenditure. Then comes the economic and social community development, in which we see social community, पंचायती राज इंस्टीट्यूशन, सरपंच भवन, आप गांव में जाते हो तो आपको पंच भवन देखने को मिलता है. देन यू सी कम्युनिटी रिक्रिएशनल सेंटर, इंटरटेनमेंट हाउसेस, यहाँ पे रामलीला वगैरह होती है. एंड इन डिफेंस एंड अदर एक्सपेंडिचर्स, दैट ऑल कम्स अंडर द कैपिटल एक्सपेंडिचर ऑफ गवर्नमेंट बजटिंग. सो रिमेंबर दिस, यू कैन डाउनलोड एंड सेव इट. आप इसे डाउनलोड करेंगे, सेव करेंगे और अपने वॉल पे चिपका देंगे. डेली यू विल सी दिस बजट एंड यू विल मेमोराइज इट. इसमें आप और क्या ऐड कर लोगे, इस माइंड मैप और फ्लो चार्ट इसीलिए बनता है कि आप इसे देखें और याद कर लें. आर्टिकल 112, आर्टिकल 114, ठीक है, नेम्ड एज एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट. नाउ नेक्स्ट पार्ट गोज एज द बजट कंप्राइजिंग टू पार्ट्स, रेवेन्यू अकाउंट एंड कैपिटल अकाउंट. हमने अभी देखा बजट के दो पार्ट हो गए, रेवेन्यू अकाउंट एंड द कैपिटल अकाउंट. Revenue account comprises of receipts, taxation, custom duty, corporation tax, dividends of public sector units and expenditures of government. तो दो ही चीज़ें आएंगी, या तो receipts आएंगी या expenditure होगा. Similarly in capital account we see receipts and expenditure in terms as domestic and foreign loans, loan repayment and forex reserves. This all comes under the capital account. So public expenditure comprises of the following mechanism. Public expenditure कौन कर रही है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कर रही है. किसके लिए कर रही है, सो नॉन प्लान एक्सपेंडिचर एंड प्लान एक्सपेंडिचर किसके लिए, पब्लिक के लिए, in all the levels despite any states or union territories. So non-planned expenditure comprises of not envisaged in the 5-year plan that is documented. तो 5-year plan में जो डॉक्यूमेंट नहीं हो रहे हैं, क्योंकि पहले क्या चल रही थी, प्लानिंग कमीशन चल रही थी, that was ended in year 2017. So प्लानिंग के हिसाब से रेवेन्यू जो जनरेट हो रहे हैं, है ना, रेवेन्यू रिसिट्स में इंटरेस्ट पेमेंट हो रहे हैं, एग्रीकल्चरल लोन्स एंड एक्सपेंडिचर्स. देन कम्स द ग्रांट्स टू द स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज एंड फॉरेन गवर्नमेंट्स, जो सरकार ग्रांट देती है स्टेट्स और यूटीज़ को, वो सारी चीज़ें इंक्लूड हो जाएंगी. देन इट ऑल्सो इंक्लूड्स डिफेंस रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, इंडस्ट्रियल एक्सपेंडिचर एंड ब्रॉडकास्टिंग. सो ब्रॉडकास्टिंग विविध भारती, दूरदर्शन, रेडियो एक्सेट्रा, जो भी चीज़ें गवर्नमेंट के द्वारा ब्रॉडकास्ट हो रही हैं. इवन द प्रोग्राम्स ऑफ 26 जनवरी, इवन विजिट ऑफ प्राइम मिनिस्टर टू डिफरेंट नेशंस. देन कम्स द सब्सिडीज दैट आर प्रोवाइडेड बाय गवर्नमेंट एंड एट वेरियस लेवल टू द फार्मर्स, टू इंडस्ट्रियलिस्ट, एट वेरियस लेवल. जो भी सब्सिडीज या छूट दिए जाएंगे, दिस ऑल मेक्स रेवेन्यू receipts. And education in terms of schools, colleges and universities, UGC, है ना, NTA, ये सारे expenditures आपको यहाँ मिल जाएंगे. Pension policies are also there.
Then comes the capital expenditure, in which you see loans to the public enterprises, loans to state. These all make it under नॉन प्लान एक्सपेंडिचर. तो याद रखेंगे प्लान एक्सपेंडिचर में क्या मिल रहा है, सेंट्रल प्लान्स एंड सेंट्रल स्टेट टू स्टेट्स. अब जो प्लान एक्सपेंडिचर होंगे वो पहले चल रहे थे 5 years प्लानिंग में. मैं इसलिए बता रहा हूँ कि कभी कभी एग्ज़ाम में ये पूछे जाते हैं कि व्हाट वेयर प्लान एंड व्हाट वेयर नॉन प्लान एक्सपेंडिचर. तो प्लान एक्सपेंडिचर दैट वाज यूज्ड बाय प्लानिंग कमीशन फॉर 5 years प्लानिंग. सो ये भी इच फिजिकल ईयर में अपडेट हो रहे हैं इन टर्म्स ऑफ एग्रीकल्चर. एग्रीकल्चर में कैनाल्स बनानी हैं, रोड्स बनाने हैं, फर्टिलाइजर्स की फैक्ट्री बनानी है, राइस मिल्स बनानी है. विलेज लेवल पे जो भी एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट होंगे, रूरल डेवलपमेंट होंगे, ट्रांसपोर्टेशनल डेवलपमेंट्स, रोड्स, रेलवेज, पोर्ट्स, in these things we see done by the central government itself that comes under the planned expenditure. तो ये सारे एक्सपेंडिचर कहाँ पे आएंगे, प्लान्ड एक्सपेंडिचर में. एंड ऑल्सो इट इंक्लूड्स टेक्नोलॉजी एंड इन्वायरमेंट. सो हम देखते हैं कि जो भी गवर्नमेंट बॉडीज़ हैं, DRDO जो रिसर्च में एक्सपेंडिचर करते हैं, नॉट ISRO. आप याद रखेंगे ISRO सेल्फ डेवलप्ड कॉरपोरेशन होगी है एंड इट मेड इट्स एक्सपेंडिचर बाय इटसेल्फ. अंतरिक्ष कॉरपोरेशन. सो ये सारे जो भी एक्सपेंडिचर जो लेंगे ये बोरो करेंगे, दैट विल कम अंडर इट. देन कम्स द मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम, है ना. ये सारी चीज़ें प्लान्स में हो गई. सोशल सर्विसेज इन टर्म्स ऑफ ओल्ड एज पीपल, एल्डरली के लिए ओल्ड एज होम्स, ओल्ड एज मेडिसिन, हॉस्पिटल्स. एंड डिसेबल्ड पीपल के लिए व्हील चेयर प्रोग्राम्स एंड स्कीम्स which are made for this, for minority sections and for women development, maternity benefit, pregnancy benefit, and medicines for these sectors, doctor facilities. So everything that comes under the social services includes under the central planning. These are all parts of public expenditure. जनता का खर्चा के लिए ये सारे एक्सपेंडिचर हो रहे हैं. देयरफॉर इट इज़ कॉल्ड एज पब्लिक एक्सपेंडिचर. नाउ व्हाट आर अदर थिंग्स दैट इज present in the budget? Revenue receipts, and that is not needed to pay again by the payee. तो जो पेई हैं उनको बार बार ये देने की आवश्यकता नहीं है, इसीलिए इसे कहते हैं रेवेन्यू रिसीट्स. ये कब दी जाती है, टैक्स के रूप में. आप देखते हो आपके पापा मम्मी या द वर्किंग पीपल ईयर में एक बार साल में टैक्स डिपॉजिट कर देते हैं एंड दे आर फ्री ऑफ एनी टैक्सेस एंड ड्यूटीज़. देन कम्स द यूनियन एक्साइज टैक्स. इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट पे जो टैक्स लगता है वो आप देखते हैं कंपनीज ईयरली बेसिस पे एक बार देती हैं. देन कम्स द GSTN. अब GST यहाँ भी घुस गई तो क्या हो गया, GST नेटवर्क बना दिया गया जिसके थ्रू जो भी GST सबमिट करेंगी कंपनी वो ईयरली बेसिस पे होंगी. इट इज़ यूज्ड इन द एक्साइज टैक्स. देन कम्स द कस्टम ड्यूटीज़, कॉर्पोरेट टैक्सेस, इनकम टैक्स एंड सर्विस टैक्स. देन कॉर्पोरेट टैक्स ऑन कंपनीज प्रॉफिट. तो अब यूनिवर्सल कॉर्पोरेट टैक्स की बात हो रही है. अर्लियर इट वाज 30%, नाउ इट इज रिड्यूस टू 25%, somewhere it is 22% also. एंड कस्टम ड्यूटीज़, इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट आइटम्स, तो ये भी ईयरली होती है. ऑल दिस थिंग्स आर ईयरली बेसिस. नाउ देयर आर नॉन टैक्स रेसिट्स ऑल्सो. नॉन टैक्स रेसिट्स comprise of interest payment on loans given by the center. जो भी लोन सेंटर गवर्नमेंट ने दिया है that comes under the non-tax. And there is dividend and profit shares that held by गवर्नमेंट इन प्राइवेट एंड सेमी गवर्नमेंट एंटिटीज़. जो भी चीज़ें प्राइवेट बॉडीज़ के साथ या सेमी गवर्नमेंट बॉडीज़ के साथ शेयर की गई हैं भारत सरकार के द्वारा, ये आ जाते हैं नॉन टैक्स के अंतर्गत. देन कम्स द करेंसी, मिंट प्रॉफिट फ्रॉम द करेंसी सर्कुलेशन. करेंसी प्रिंटिंग में अभी हमने देखा इलिसिट करेंसी को सीज करने में
and refreshing the new notes and coins by Government of India through RBI mechanism. तो भी सारी जो प्रॉफिट जनरेट होती है यहाँ से दैट गोज टू रेवेन्यू रेसिट्स. इट ऑल्सो इंक्लूड्स ग्रांट इन एड्स फीस एंड गिफ्ट्स ऑल्सो. गवर्नमेंट के जैसे ऑफिशियल्स, प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट, फॉरेन मिनिस्टर कहीं भी ट्रैवल करते हैं तो उनको बहुत सारे गिफ्ट्स मिलते हैं. सो अगर वो गिफ्ट को आरबीआई के साथ सबमिट करते हैं दैन बिकम्स रेवेन्यू रेसिट्स. और जो भी गवर्नमेंट कैपेसिटी में आप याद रखेंगे कि पब्लिक पर्सन होते हैं, जो भी गवर्नमेंट अथॉरिटीज़ होते हैं, यानी कि प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट एंड दिस बॉडीज़ आर द गवर्नमेंट अथॉरिटीज़. तो ये जहाँ भी ट्रैवल करते हैं, कोई फंक्शंस या किसी भी प्रोग्राम में पार्टिसिपेट करते हैं, विन इन G20 मीटिंग, यूनाइटेड नेशंस मीटिंग, WTO, WEF or any kind of meetings, then these comes under the government receipts and form the part of revenue receipts. Now comes the capital receipts, which creates liability for the government. ये क्या है? जिम्मेदारी है जिसको पे बैक करनी है. The reduced assets. So ये कैसे हैं? जो लोन्स लिए गए हैं इन टर्म्स ऑफ परचेज हो रही है, राफेल ड्रोन्स पर परचेज हो रहे हैं, या कोई भी न्यू टेक्नोलॉजीज, इरिगेशन इंस्ट्रूमेंट, फर्टिलाइजर्स, ब्रह्मोस, anything that has been taken by government of India, that is considered under the loans of the government. तो ये गवर्नमेंट की क्या हो गई? लाइबिलिटीज क्रिएट हो गई. एंड इट इज़ टू टाइप: डेट क्रिएटिंग कैपिटल रेसिट्स एंड नॉन डेट कैपिटल रेसिट्स. जो कि ऋण नहीं क्रिएट करती हैं वो हो गई नॉन डेट क्रिएटिंग कैपिटल रेसिट्स, है ना. जैसे कि ब्रह्मोस रशिया से इंडिया ने एक बार में ले लिया. नाउ इट डू नॉट नीड टू पे बैक, दैट इज़ वन टाइम पेमेंट. एंड डेट कैपिटल इन विच द मार्केट लोन इज प्रेजेंट सच एज बॉन्ड्स एंड पब्लिक यील्ड्स. जो बॉन्ड्स इशू करती है गवर्नमेंट तो वो सरकार के ऊपर ऋण हो जाता है. Let us see in more detail. Then comes the T-bills also. अब ये डेट क्रिएटिंग कैपिटल रेसिट्स में क्या क्या चीज़ें आ गई? बॉन्ड्स तो आ ही गया, है ना. टी बिल्स भी आ गए, कूपन बॉन्ड्स एंड फंडेड सिक्योरिटीज़. टी बिल्स इशू होते हैं 91 डेज, 180 डेज के लिए. तो ये शेयर मार्केट का पार्ट है. इसे मैंने शेयर मार्केट वाले पार्ट में पढ़ाया है जब हम सेबी डिस्कस कर रहे थे, तो आप प्रीवियस लेक्चर देखें. देन कम्स द कूपन बॉन्ड्स, फंडेड सिक्योरिटीज़ ऑफ गवर्नमेंट. फंडेड सिक्योरिटी जो गवर्नमेंट की होती है वो भी इसके अंदर आ गई. इसके अंदर डेट क्रिएटिंग कैपिटल रेसिट्स, क्योंकि गवर्नमेंट ने इसको फंड किया है, गवर्नमेंट ने इस पर खर्चा किया है. एंड RBI acts banker to the government ways, means and advances. RBI के द्वारा जो भी एक्सपेंडिचर किए गए हैं इन मर्जर एक्विजिशन, इन एक्सपेंडिचर्स एट वेरियस लेवल्स, तो RBI के द्वारा जो भी खर्चे किए जा रहे हैं, करेंसी प्रिंटिंग में भी, वो सारी चीज़ें आ गई डेट क्रिएटिंग कैपिटल रिसीट्स में. तो ये हो गया DCR. अब देखते हैं NDCR, नॉन डेट क्रिएटिंग कैपिटल रेसिट्स. अब बजट का ये पार्ट है. जब आर्टिकल 114 को पढ़ते हैं, इट प्रोवाइड्स अमाउंट्स रिसीव्ड बाय द डिस्पोजल ऑफ एसेट्स. एसेट्स का जब भी डिस्पोजल होता है तो जो अमाउंट निकल के आ रहा है दैट इज़ अंडर नॉन डेट कैपिटल रेसिट्स. देन इट इंक्लूड्स रिकवरी ऑफ लोन्स गिवन बाय गवर्नमेंट टू अदर एंटिटीज़. अब जो भी सेक्टर्स को गवर्नमेंट ने लोन दिया है, MSMEs को, प्रायोरिटी सेक्टर्स को या बैंक्स को, वो जब रिकवर हो रही हैं तो वो NDCR की पार्ट हैं. इट ऑल्सो इंक्लूड्स डिसइन्वेस्टमेंट शेयर्स ऑफ PSUs एंड पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेज इन टर्म्स ऑफ रिड्यूस्ड एसेट्स. अब हम देखते हैं डिसइन्वेस्टमेंट क्या होता है. व्हाट इज डिसइन्वेस्टमेंट? सपोज दिस इज अ गवर्नमेंट बेस्ड कंपनी such as DRDO. Now government faces problem. FCI का एग्जांपल लेते हैं, फर्टिलाइजर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया. Now it was a public sector enterprise. Government was making
expenditure and terms in their working, in their functioning, employment, recruitment, and different kind of mechanism involved with FCI. But somehow Indira Gandhi government visualized कि हमें अरेबियन कंट्रीज से सस्ते में फर्टिलाइजर मिल जा रहा है, so it turned off or terminated many factories in 1970s because they were loss making. ये लॉस क्रिएट कर रही थी, they were not having any profit to the government. अब इससे बचने के लिए सिंस 1990s गवर्नमेंट ने न्यू मैकेनिज्म निकाला, क्योंकि लोगों की जॉब चली गई, देर वॉज लॉट्स ऑफ सुइसाइड, लोगों ने आत्महत्या कर ली, जॉब चली गई, पॉवर्टी, डेट रिडन फैमिलीज, सोशल स्ट्रक्चर डिस्ट्रॉय हो गया. नाउ व्हाट गवर्नमेंट सी, government thinks that it has to maintain a process in which government persistently create a profit level, एक profit level minimum level पे चलते रहना चाहिए, and around which it should have private companies participating with the government bodies. क्योंकि गवर्नमेंट सेक्टर में बहुत ज़्यादा रेड टेपिज्म, लेथर्जी, टाइम डिलेड है ना, ब्यूरोक्रेटिक हर्डल्स, दैट इज़ कॉल्ड एज आयरन केज, तो फंसे रहते थे गवर्नमेंट सेक्टर के लोग. बट प्राइवेट पार्टनरशिप से क्या होता है, वर्क इज़ फास्टर, एफिशिएंसी इंक्रीज्ड, एंड many bodies are taking part in the private sector decision making is faster. तो प्राइवेट सेक्टर्स को उसमें पार्टिसिपेट करने की प्रोसेस लाई गई, जिसमें गवर्नमेंट सेल्स इट्स शेयर्स ऑफ द ओन कंपनी, दैट इज पब्लिक सेक्टर यूनिट की शेयर्स को ये सेल करती है टू द प्राइवेट सेक्टर बॉडीज अराउंड एनी पार्ट ऑफ इट्स शेयर, 30, 40 और 50% ऑफ शेयर is dissolved or diluted to the private bodies. अब ये शेयर प्राइवेट बॉडीज़ के पार्ट चलेगी. एग्रीमेंट कर लिया प्राइवेट बॉडीज़ ने कि फर्टिलाइज़र के मैनेजर्स, डायरेक्टर हमारे रहेंगे, यानी कि सपोज अडानी ने ले लिया फर्टिलाइज़र कॉरपोरेशन को. नाउ द पीपल एट मैनेजमेंट लेवल एंड पीपल एट द डायरेक्टरेट लेवल विल बिलोंग टू द Adani company, so it will take larger part of decision making, and it will also provide the salaries to the employees and workers working there. So disinvestment से क्या प्रॉफिट हुआ, गवर्नमेंट का बर्डन कम हो गया, गवर्नमेंट की टाइम डिलेड घट गई, गवर्नमेंट के पास इफिशिएंट वर्क फोर्स हो गया, एंड दिस सिक कंपनी, अब ये बीमार कंपनी जो थी, टर्न इनटू प्रॉफिट मेकिंग कंपनी. समझ में आ गया. सो डिसइन्वेस्टमेंट शेयर इन PSU एंड PSE इज ऑल्सो अ नॉन डेट कैपिटल रिसीट्स, है ना. सो देखिए कितना प्रॉफिट हो रहा है, जनरेशन भी हो रहा है, प्रोडक्शन भी बढ़ गया, प्रॉफिट भी क्रिएट हो रहा है, एंड इट इज एडेड अंडर द नॉन डेट कैपिटल रिसीट्स ऑफ द बजट. नाउ वी सी द रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स. व्हाट इज रेवेन्यू एक्सपेंडिचर? वन वे पेमेंट, मनी इन्वेस्टेड will not come back to the government. So revenue expenditure कहाँ पे होता है, जहाँ पे प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग या गवर्नमेंट स्कीम्स जहाँ पे दी जाती है, सच एज विलेज बेस्ड स्कीम, सब्सिडीज. अब सब्सिडी जो चली गई वो तो वापस होती नहीं है, किसान खाद पे, यूरिया पे, इरिगेशन पे सब्सिडी ले लेते हैं, लेकिन प्रोडक्शन नहीं हुआ, मानसून फेलियर हो गया. सो इट इज़ वन टाइम एक्सपेंडिचर एंड इट मेक्स लॉस मेनी अ टाइम्स. सो एक्सपेंडिचर इंक्लूड्स इंटरेस्ट पेड ऑन बोरोइंग, जो भी लोन लिए गए थे उस पर जो इंटरेस्ट पेड हुए गवर्नमेंट के द्वारा. गवर्नमेंट ऑल्सो मेड एक्सपेंडिचर ऑन डिफेंस पर्पस एंड पुलिस रिफॉर्म्स, जेल बनाने के लिए, डिफेंस सेक्टर्स में इम्प्रूवमेंट के लिए, न्यू टेक्नोलॉजी को परचेज करने के लिए, है ना, चिनूक हेलीकॉप्टर या राफाल डील, drone deals, these all cost a lot of money towards the government pocket, and therefore these are the one side payment, and many a time they are prone to losses. It also includes subsidies given, मैंने बताया fertilizer subsidies या other subsidies कहीं भी दी जा रही है, that is under revenue expenditure. grant to the states, स्टेट को, जैसे कि बिहार में भी फ्लड आ गया, तो बिहार गवर्नमेंट बोलेगी कि वी गिव मी ग्रांट्स, गिव मी सम सपोर्ट, गिव मी सम एड,
एंड दीज आर ऑल्सो आस्किंग फॉर स्पेशल स्टेट। स्पेशल स्टेट का दर्जा मिलेगा तो इन्हें बहुत सारी ग्रांट मिलेंगे, बहुत सारे लोन्स मिलेंगे जो कि नॉन पेबल हैं। सो दीज आर अगेन very insecure and loss prone. There are pension and salaries charged expenditure. There are social service schemes such as जननी सुरक्षा योजना, सौभाग्य स्कीम, सबला स्कीम, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। तो इसमें वन टाइम एक्सपेंडिचर फ्रॉम द सेंटर टुवर्ड्स स्टेट होता है जो कि नॉन रिकवरेबल है। सो दिस इज ऑल अबाउट वन वे पेमेंट ड्यूरिंग द budgetary expenditure. Now, what is capital expenditure? Capital expenditure comprises of periodic income of government. Whatever is spent will come back. So expenditure on asset creation. Suppose smart cities government ने बना दी, या exclusive economic zone बना दिए, coastal economic zone बना दिए, special economic zones बना दिए जहाँ पे बहुत सारी industries are working together in totality and they are generating products, profits and एम्प्लॉयमेंट। तो ये सारे इन्वेस्टमेंट क्या होते हैं, एसेट को क्रिएट कर रहे हैं, प्रॉफिट जनरेट कर रहे हैं, एंड दे आर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। सच एज दिल्ली मेट्रो कॉरपोरेशन बनाई तो मेट्रो सिटीज़ बन गई, अब मेट्रो जा रही हैं छोटे छोटे शहरों तक, है ना, लखनऊ मेट्रो रेल, पटना मेट्रो रेल, बैंगलोर मेट्रो रेल। दिस ऑल आर इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट फॉर लॉन्ग टर्म क्रिएटिंग assets and these are permanent assets. So these are profit making and therefore they are categorized under the capital expenditures. ठीक है? Now let us see different types of budgeting. ये भी समझना जरूरी है कि budgeting कैसे हो रही है and what are its different types. So moving ahead, there are basically 4 types of budgeting. Zero based budgeting includes methods in which all budget allocation are set to nil and beginning of the financial year. तो जो भी पहले के बजट पास हुए हैं उनको ज़ीरो माना जाएगा, ज़ीरो मान के जो भी बजटिंग स्टार्ट की जाएगी दैट इज़ ज़ीरो बेस्ड बजट। सेकेंड इज जेंडर बजटिंग इन विच इट इज़ कीपिंग इन माइंड टू रिमूव इनइक्वालिटीज़ ऑन द जेंडर बेस्ड, मेल एंड फीमेल के रेशियो को इम्प्रूव करने के लिए एंड उनके पार्टिसिपेशन को इम्प्रूव करना थ्रू रिमूवल ऑफ इनइक्वालिटीज़ एट इनकम, एट एक्सपेंडिचर, एट जॉब, एट मेडिसिन्स, एट स्कूलिंग, एट हाइजीन, एट फूड, इन ऑल टर्म्स दे आर प्रोवाइडेड रिमूवल ऑफ इनइक्वालिटी बेस्ड ऑन जेंडर। सो अब थर्ड जेंडर भी आ गए हैं, ट्रांसजेंडर्स आर ऑल्सो इंक्लूडेड। देन कम्स द कैपिटल बजटिंग। कैपिटल बजटिंग में क्या हो रहा है, लॉन्ग टर्म इंक्लूजन एट द कैपिटल स्ट्रक्चर। हमने देखा अभी कैपिटल क्रिएट हो रहा है, PSUs नई फैक्ट्रीज गवर्नमेंट के द्वारा बनाई जा रही हैं। दिस ऑल कम्स अंडर द कैपिटल बजटिंग। सो इट इंक्लूड्स कैपिटल रेसिट्स एज वेल एज द कैपिटल एक्सपेंडिचर ऑल्सो। देन कम्स द आउटकम बजट। आउटकम बजट में क्या हो रहा है, दैट इंक्लूड्स द आउटकम जनरेटेड आउट ऑफ द प्रीवियस ईयर्स बजट। तो इसे किसने ऐड किया था, पी चिदम्बरम। याद रखेंगे, अ न्यू काइंड ऑफ बजटिंग was added in the budgetary mechanism by former finance minister P. Chidambaram in year 2005-2006। तो आउटकम बजट में क्या होता है, जो भी प्रोग्राम्स बनाए गए थे प्रीवियस ईयर्स में उनके डेवलपमेंट आउटकम को मेज़र किया जाता है कि हाउ फार दिस प्रोग्राम्स हैज़ बीन सक्सेसफुल एट वेरियस लेवल्स। This includes the outcome budgeting. Now let us look into some important facts of this year budget 2023 and 24. So Ministry of Finance has published this year budget. इसमें हम देखते हैं कैसे एक्सपेंडिचर्स हो रहे हैं, मनी को कैसे यूज़ किया जा रहा है। आपको बजट देखना ज़रूरी है, तभी आप समझोगे ना कि पॉलिसी मेकिंग में बजट कैसे यूज़ हो रहा है, किस सेक्टर को इम्पोर्टेंस दी गई, कहाँ पे कितने खर्चे को डाला गया, बिकॉज ऑल दिस कम्स अंडर द पब्लिक मनी। आपके और हमारे टैक्स का पैसा गवर्नमेंट यूज़ कर रही है। तो हम देखते हैं गवर्नमेंट कैसे यूज़ कर रही है हमारे पैसे को। अंडर अमृत काल वी सी अपॉर्चुनिटीज़ फॉर सिटीजन विथ फोकस ऑन द यूथ। यूथ के एम्पावरमेंट के लिए नेशनल स्किल क्वालिटी फ्रेमवर्क, स्किल डेवलपमेंट मिशन
नई मंजिल इन कश्मीर, नई तालीम, ये सारी स्कीम लाई गई हैं। ग्रोथ एंड जॉब क्रिएशन के लिए सेकंड पर्सपेक्टिव, ग्रोथ के लिए क्या डाला गया, न्यू इंडस्ट्रीज, एमएसएमई सेक्टर्स को सपोर्ट करना, स्टार्टअप एंड स्टैंड अप को सपोर्ट करना एंड बूस्टिंग दिस सेक्टर्स। देन कम्स द strengthening and rejuvenating the microeconomic environment, macroeconomic at the global level. So global level में भारत पहले कैसे देखा जा रहा था, अरे इंडिया इज डेट रिडन कंपनी, इंडिया इज वेरी पुअर country, India is having so much of expenditures. Now India is improving its macroeconomic framework जिसमें इंडिया बन रही है. It is a lending country, it is providing services to many developed countries. We are at NASA also, and we are providing services to World Bank, IMF, or any of the largest companies, Google, Amazon, Facebook, Apple, or any companies around the world. We are providing services. So there is a new scheme in terms of priority basis of government of India. अमृत काल का ये विजन डॉक्यूमेंट है कि ये चीज़ें हमें फुलफिल करनी है. Then we see Saptarshi, in which 7 priority sectors are being made. First is to reach the last mile people, people at the village level, in terms of village and tribals in northeastern areas, hilly areas, or the last people. So decentralized form of development is there, है ना. Then comes the youth power, empowerment of youth through various schemes, through university education. Education में बहुत सारे changes लाए गए, जिसमें person who is in first year can change his subject and can join another course also. So यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन में बहुत सारे चेंज, एनटीए को बना दिया गया कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट के लिए, नीट आ गई मेडिकल एग्जामिनेशंस के लिए. Many changes are being made for youth empowerment. At the college and university level, skill development centers are being set up, incubation centers, R&D centers को भी डेवलप किया जा रहा है. Government also aims for financial sector development. Financial sectors comprise of banking and the monetary sectors. Then comes the green growth, which includes growth plus protection of environment, pro planet people, है ना, life, and following the sustainable development goals by United Nations and fulfilling the COP 14 to COP 26 targets. It also includes the potential unleashing innovation at various levels and providing the programs, funds, and functionaries at different sectors. It also includes infrastructure and investment, development of infrastructure at roads, railways, transportation, aeroplanes, waterways, seaways. हमने देखा बहुत सारी स्कीम्स आई इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए. दिस आर इंक्लूडेड इन द infrastructure development. And last comes the inclusive development, inclusion at different social sectors. Social sectors में कोई minorities अगर पीछे हो रही हैं के लिए minorities schemes, disabled के लिए schemes, women empowerment and old age benefits is all included in the inclusive development mechanism. Then comes the provisions from the government side, includes सबका साथ सबका विकास. सबका साथ सबका विकास में बिल्डिंग डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर को डिजिटल प्लेटफॉर्म पे लाया गया. ई चौपाल, इलेक्ट्रॉनिक चौपाल फॉर विलेज बेस्ड सोसाइटीज़. A&B horticulture clean plant to boost production of high value horticulture crops. अब हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स जो भी निकल रहे हैं विलेजेस से, उनके भी डेवलपमेंट के लिए, बिकॉज इट्स बूस्ट इकोनॉमिक ग्रोथ, उनके लिए भी अलग स्कीम लाई गई. सेटिंग अप ऑफ एग्रीकल्चर एक्सलेशन फंड AAF को बनाया गया है, इन विच डायरेक्ट फंडिंग टू द एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज विल बी प्रोवाइडेड थ्रू इट. टारगेटेड फंडिंग ऑफ 20 lakh crore is provided. Credit target at animal husbandry, dairy and fishery sectors.
उनको भी क्रेडिट फैसिलिटी, लोन्स, ग्रांट्स दिए गए हैं। पीसी कल्चर रिवॉल्यूशन लाया गया है, न्यू फॉर्म ऑफ रिवॉल्यूशन इज देयर, एंड इट आल्सो सेटिंग अप ऑफ वाइडली अवेलेबल स्टोरेज कैपेसिटी। तो स्टोरेज कैपेसिटी को भी बढ़ाया जा रहा है। वी सी देयर इज इनेबलिंग ऑफ सेल एट अप्रोप्रिएट टाइम, सेल्स को अप्रोप्रिएट टाइम पे बढ़ाया जा रहा है। देन वी सी मेकिंग ऑफ इंडिया अ ग्लोबल हब फॉर मिलेट्स, श्री अन्ना सपोर्ट। सो मिलेट्स के प्रोडक्शन में, बिकॉज इट इज़ डिक्लेयर्ड एज इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स, so IIMR, Indian Institute of Millets, is also being developed in Hyderabad for promoting the research. So आप इस ग्राफ को याद रखेंगे, you see rising growth in agriculture sector due to which large agricultural productivity in food grains, wheat, cereals, vegetables, fruits we sell through COVID-19 period. And there is record food grain production in financial year 2021-2022. आप देख रहे हैं रिकॉर्ड प्रोडक्शन अराउंड 320 to 340 million tons of agri productivity. So you see large agricultural productivity is seen. Now budget also aims for सबका साथ सबका विकास, that aims at the inclusive development through nursing colleges. ना वुमेन डेवलपमेंट के लिए इंक्लूसिव डेवलपमेंट की जहाँ बात होगी वहाँ पे आप समझ लेंगे सोशल सेक्टर की डेवलपमेंट, तो वहाँ पे आ जाएंगी वुमेन डेवलपमेंट, है ना, चाइल्ड डेवलपमेंट, मेडिसिन्स, ये सारी चीज़ें देखने को मिल रही हैं। सो 157 न्यू नर्सिंग कॉलेज टू बी एस्टैब्लिश, रिडक्शन ऑफ एनीमिया, अब हेल्थ सेक्टर की बात होगी तो एनीमिया को रिड्यूस करने के लिए नया प्रोग्राम लाया गया, दैट इज़ इंद्रधनुष मिशन, इंद्रधनुष मिशन टू रिड्यूस सिकल सेल अनीमिया, स्पेसिफिकली द सिकल सेल अनीमिया। इससे क्या होती है, महिलाओं में खून की कमी हो जाती है एंड उसके बच्चे स्टंटेड पैदा होने लगते हैं। सो उसको प्रिवेंट करने के लिए सिकल सेल अनीमिया प्रोग्राम लाया गया। देन ICMR लैब्स को जॉइंट पब्लिक एंड मेडिकल कॉलेज के अंतर्गत रिसर्च के लिए लाएगा। सो ICMR based Indian Council of Medical Research to collaborate with the private institutions and medical college for the medical research, and new program to develop the pharmaceuticals and medicines. These are all included in the Sabka Saath Sabka Vikas scheme. It also includes education and skilling. तो education के लिए UGC, NEET, CUET में नए बदलाव किए गए। रीस्किलिंग एंड अपस्किलिंग ऑफ एजुकेटेड यूथ के लिए नई स्कीम, नई मंजिल, नई तालीम, ये सारी स्कीम्स लॉन्च की गई। स्किल डेवलपमेंट अंडर नेशनल स्किल क्वालिटी फ्रेमवर्क टू सपोर्ट द डेवलपमेंट ऑफ ITI सेक्टर्स, डिप्लोमा कॉलेजेस, जहाँ पे इंडस्ट्रियली ट्रेंड पीपल will learn about new tools, technologies that are used in the AI based industry. अब हम देख रहे हैं कि हम AI based, robotic based industries की तरफ बढ़ रहे हैं, तो उनको एडवांस करने के लिए रीस्किलिंग की गई है। देन रिवैम्प टीचर्स ट्रेनिंग वाया डिस्ट्रिक्ट इंस्टीट्यूशन फॉर एजुकेशनल ट्रेनिंग, अब डिस्ट्रिक्ट वाइज एजुकेशनल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट हो गए। नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी टू सेट अप अक्रॉस चिल्ड्रन एंड एडोलसेंट पीपल, डिजिटल लाइब्रेरी जहाँ पे ऑनलाइन ऐप बना दिया गया टू हैव अ कंडीशनिंग फॉर द ऑनलाइन लर्निंग ऑफ चिल्ड्रन एंड एडोलसेंट्स। इट ऑल्सो इंक्लूड्स स्टेट्स which encourage setup of physical libraries for पंचायत एंड वार्ड लेवल। अब पंचायती राज इंक्लूजन के लिए पंचायत लेवल और वार्ड लेवल पे लाइब्रेरी सेटअप कर दी जा रही हैं। नाउ दिस आर द सोशल इंक्लूजन, सबका साथ सबका विकास। Now we see next part in which how changes have been made. अब ये चीज़ें समझ में आ रही हैं, किसने बजट पढ़ा होगा मार्च में, तो फरवरी मार्च के टाइम में तो ये रिवीजन हो जाएगा, बट स्टिल यू नीड टू फोकस योर सेल्फ टुवार्ड्स द mechanism of budget. Now big trends that accommodate all. अब
इसके लिए क्या प्रोग्राम है जो सभी स्फीयर को इम्पैक्ट कर रहा था? सो क्लीन वाटर फॉर ड्रिंकिंग, हर घर नल का जल स्कीम लाई गई गवर्नमेंट के द्वारा। सो 9 करोड़ ड्रिंकिंग वाटर कनेक्शन टू द रूरल हाउस होल्ड इन द रूरल एरियाज and 11.7 crore of household toilets under Swachh Bharat Mission 2 for clean and sanitized family. 9.6 crore LPG connection under Ujjwala Yojana, है ना? Ujjwala for LPG distribution. Then cash transfer of 2.2 lakhs crore under PM Kisan to the farmers. Rural credit को बढ़ाई गई. Rural credit has been enhanced up to 2.2 lakhs crores of rupees over 11.4 crore farmers. Insurance cover of 44.4 crores under Pradhan Mantri Raksha Bima Yojana and Pradhan Mantri जीवन ज्योति बीमा योजना, इनके अंतर्गत इंश्योरेंस प्रोवाइड कर दी गई जो विलेज और रूरल सेक्टर्स में लोग हैं। देन जनधन बैंक अकाउंट हमने पढ़ा था प्रीवियस इकोनॉमी सर्वे में, बापू जैम ट्रिनिटी बायोमेट्रिकली ऑथेंटिकेटेड प्रोग्राम अपडेट एंड जनधन आधार मोबाइल। तो जैम अकाउंट जिनका भी है उनको डायरेक्ट फंड पीएम किसान योजना के अंतर्गत 6,000 रुपीज़ उनके पॉकेट में डाला जा रहा है। देन 220 करोड़ ऑफ कोविड वैक्सीनेशन ऑफ 102 करोड़ ऑफ पर्सन्स, है ना? सभी को वैक्सीनेटेड किया गया टू प्रिवेंट फ्रॉम कोविड एंड सिमिलर काइंड ऑफ पैंडेमिक इन डिफरेंट वेरिएंट्स। सो you see this graph is there which shows clearly rise in the expenditure at various level in making a resilient structure of economy and society also. We also see urban unemployment rate is decreasing under 7.5% which was previously 29%. Keep it in mind when you write your answer. It also includes programs of reaching the last mile. अब बजट और क्या इंक्लूड कर रहा है? लास्ट माइल कनेक्टिविटी के लिए प्रधानमंत्री पार्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप्स, ट्राइबल्स को इंक्लूड करने के लिए पीवीटीजी ग्रुप्स। सो प्रधानमंत्री पीवीटीजी प्रोग्राम इज लॉन्च्ड अंडर दिस बजट। ये कौन से ट्राइबल ग्रुप हैं? सो ट्राइबल ग्रुप्स आर दोज पीपल who live under the forest area and subtrophs of forest dwellings. So particularly vulnerable tribals क्या होंगे? The tribals which are vulnerable and as categorized by the government agencies that certain limited people of tribals who are particularly vulnerable. So these are comprises of negroids and tribals in northeastern areas, tribals of Jharkhand, Chhattisgarh, Odisha, in which various tribal populations are there which are particularly vulnerable. These are also found in Andaman Nicobar, Jorwa tribes और ऐसी जो कि रिपोर्ट में हमने देखी थी. So financial assistance is also provided to sustainable micro irrigation projects. अब माइक्रो इरिगेशन प्रोजेक्ट्स के लिए भी फंडिंग दी जा रही है. एंड रीजन्स लाइक कर्नाटका जहाँ पे somehow drought is there, Vidarbha, Madhya Pradesh and Rajasthan area. More teachers are also provided through 740 Eklavya model school. Eklavya model in tribal areas. So residential school is there, that is in model of Eklavya. Then Bharat Shri scheme, it is to be digitalization of ancient inscriptions. जो भी historical monuments या writings, inscriptions आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया को मिल रही है उसको डिजिटलाइज्ड किया जा रहा है. दैट इज भारत श्री स्कीम. रिमेंबर दिस थिंग, इट इज वेरी न्यू, भारत श्री स्कीम. सो इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इन्वेस्टमेंट बूस्टिंग इज देयर थ्रू इन्वेस्टमेंट बूट्स अप एंड प्रोडक्टिव कैपेसिटी मॉडल. इसमें क्या किया जा रहा है? कैपेसिटी को मल्टीप्लाई किया जा रहा है थ्रू राइजिंग एम्प्लॉयमेंट ग्रोथ. So increased capital investment up to 33.4%, 10 lakh crores people के लिए. Then credit facility up to 50 years interest free loans to state government to incentivize infrastructure investment.
पहले 5 years के लिए लोन दिया जाता था स्टेट गवर्नमेंट को अंडर 5 years प्लानिंग. नाउ दिस लोन इज प्रोवाइडेड अप टू 50 years of period. So that is again very important. Capital outlay of 2.4 lakh crore for the railways. Railways को highest capital outlay दिया गया. Then comes the 100 transport infrastructure project for end-to-end connectivity, ports, coal, steel, fertilizers. These are all important sectors. यानी 8 core industries को through model of transportation connectivity has been ensured under this project, creating under infrastructure in tier 2 and tier 3 cities while establishing of UIDF अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड को इस्टेब्लिश किया गया है ताकि क्रेडिट फैसिलिटी मिल सके. नाउ वी सी इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ ग्रीन ग्रोथ. देयर इज सोशल जस्टिस मैकेनिज्म, मेक एआई इन इंडिया, नेशनल डेटा गवर्नेंस पॉलिसी, विवाद से विश्वास. सो ट्रस्ट बेस्ड गवर्नमेंट इन विच different sectors are provided as a trust based partnership. So AI based development in agriculture, health and sustainable cities. App based services are provided. इसमें हम देखते हैं कि बहुत सारे apps बना दिए गए हैं जिससे कोई भी person directly कोई भी सर्विस को facilitate कर सकता है. Then comes national data governance policy to be introduced. डेटा गवर्नेंस में स्टार्टअप एंड जो एकेडमिया है उसको कोलैबोरेट किया जाएगा. जो भी स्टार्टअप्स एंटरप्रेन्योर्स अपनी फैक्ट्रीज चला रहे हैं एट एमएसएमई लेवल, उनको इन कॉलेज स्टूडेंट्स हु आर डूइंग द प्रोफेशनल courses in BTech, diploma and ITI colleges will be directly connected to these industries. Then comes the Vivad se Vishwas first, in which less stringent to MSMEs. MSMEs जो भी destroy हो रही थी उनको विश्वास दिया गया कि you can run through our support and collaboration by government agencies. Then V2V part 2, विवाद से विश्वास part 2, in which contractual disposed of governments, जो भी disputes चल रहे थे courts में उनको resolve किया गया and liberalized किया गया. Then comes the e-courts to be launched. So efficient and effective justice in a time-bound manner is ensured by the e-courts. Then comes the entity of digital locker. अब digital locker में आप क्या करते हो? अपनी सारी आधार information, driving license, bank details, whatever you keep in a digital way, you can keep locked with the digital locker. Then provides provision of 100 labs for 5G services. 5G services के लिए 100 labs provide की गई हैं प्राइवेट कंपनीज को. Then comes R&D grant for lab grown diamonds. अभी आपने देखा था मोदी जी यूएस में गए थे, उन्होंने फर्स्ट लेडी दैट वाज द वाइफ ऑफ प्रेसिडेंट जो बिडेन, तो उनको उन्होंने एक डायमंड गिफ्ट किया एंड दैट इज लैब ग्रोथ डायमंड. अब लैब ग्रोथ डायमंड से क्या होता है फ्रेंड्स? यू सी डायमंड इज़ अ प्राइमरी सेक्टर इंडस्ट्री. डायमंड को किसी भी माइंस या कहीं भी एक्सट्रैक्ट किया जाता है जिसमें बहुत सारे लेबर इन्वेस्टमेंट लगते हैं. वेरी मच काइंड ऑफ इंटेंसिव एक्सट्रैक्शन इज़ बीइंग डन. तो कोल माइंस में, डायमंड माइंस में एक्सट्रैक्शन किए जाते हैं, उसमें डायमंड्स निकलता है, उसकी प्रोसेसिंग होती थी, then it become a diamond. It takes more than 6 to 7 months duration. अब lab grown diamond में क्या हो रहा है? Now this diamond will be growth in the lab only. laboratory में कार्बन कंपोनेंट को, डायमंड का स्ट्रक्चर कैसा है? आप कार्बन कंपोनेंट को देखते हैं, सिंगल बॉन्ड कार्बन इन अ हेलिकल स्ट्रक्चर. तो ऐसे कार्बन के स्ट्रक्चर को लेबोरेटरी में ही कार्बन की सिंगल बॉन्डिंग के द्वारा डेवलप किया जा रहा है एंड दैट इज सेम एज दैट ऑफ ओरिजिनल डायमंड. तो मोदी जी ने इसका बढ़िया एडवर्टीजमेंट कर दिया कि इंडिया इज़ नाउ प्रोवाइडिंग द लग्जरियस कमोडिटी. तो अब ये डायमंड अगर बिकता है फॉरेन मार्केट में, से लार्ज रेवेन्यू जनरेट होगा, है ना, लार्ज प्रॉफिट भी जनरेट होगा. सो देयर इज़ फोकस ऑन लैब ग्रोन डायमंड.
Now let us see that green development is done by government. So प्रधान मंत्री प्रणाम योजना, पीएम गोवर्धन, इसमें क्या हो रहा है कि फर्टिलाइजर्स से जो भी लॉस हो रहे थे उससे बचने के लिए ऑर्गेनिक फार्मिंग को प्रमोट किया गया है. देन गोवर्धन योजना, बायोगैस is provided through Govardhan Yojana, and inclusion in the Mishti program, in which Amrit Dharohar is provided and plantation, mangroves, ये सारे फैसिलिटीज़ के लिए मिस्टी प्रोग्राम्स. देन facilities of setting up of facilitation of farmers adopt natural farming, energy storage, बैटरी एनर्जी स्टोरेज की फैसिलिटी प्रोवाइड की गई है. देन कोस्टल शिपिंग फॉर एनर्जी इज ऑल्सो प्रोवाइडेड, है ना. एंड फंड्स टू एलोकेट फॉर द रिप्लेसिंग ऑफ पॉल्यूशन व्हीकल्स, पॉल्यूटिंग व्हीकल्स जो चल रही हैं, जो BS फर्स्ट या सेकंड नॉर्म पे अभी तक डीजल इंजन वाली हैं, उन सारे को बैंड कर दिया गया है. सो अमृत पीढ़ी यूथ पावर को इंक्लूड किया गया है इन टर्म्स ऑफ अमृत पीढ़ी. अमृत पीढ़ी इंक्लूड्स प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना 4.0. So PMKVY first, second, third, fourth. It is fourth going on. It launched covering of courses like AI, robotics, 3D printing, bioinformatics, quantum technology. It also includes measure to boost tourism sector. Tourism को बढ़ावा देने के लिए सारे इंफ्रास्ट्रक्चर को बूस्ट किया गया. Promotion of tourist places, promotion of Amrit Yojana, Atal Mission for Rejuvenation, and promotion of states at one district one products. So district wise products को enhance किया गया है. These are all included in this budget. Now last part comes as the financial sector inclusion. Financial sectors included the lending to promote the financial system, to rejuvenate the bankings which are making loss, and it provides the faster handling of administrative work at the Companies Act. So insolvency and bankruptcy code हमने पढ़ा था, which also provides measures for faster redressal through the tribunals. कौन से tribunals थे? Debt recovery tribunal and so two kinds of tribunal were there, debt recovery tribunal and another tribunal I forget. So credit guarantee schemes for MSMEs also provided. इसमें 2 लाख करोड़ तक की क्रेडिट फैसिलिटीज़ माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज को दी जा रही है. So there was debt recovery tribunal and there was company law appellate tribunal. ये 2 ट्रिब्यूनल बनाए गए फास्टर रेडिसल के लिए. Then we see benefits for the senior citizens, old aged and elderly people के लिए benefits बनाए गए हैं senior citizens के लिए. Then gifts IFSC city, gift city and smart cities development, Gujarat international financing cities, Ahmedabad. Also financial management is done. 50 years interest free loans to the states, 50 साल का इंटरेस्ट फ्री लोन्स दिया गया है. कैपिटल एक्सपेंडिचर एट पार्ट ऑफ आउटलेज देयर, फिजिकल डेफिसिट ऑफ 3.5% ऑफ GSTP. सो FRBM टारगेट्स के अनुसार फिजिकल डेफिसिट को रखा गया है. एंड फिजिकल कंसोलिडेशन इज मेड बाय टारगेटेड फिजिकल डेफिसिट ऑफ 4.5%. Now you should keep in mind when you write the answers for the mains. Now let us discuss some questions which can help you to develop answer writing skill in this part under Vairagya answer writing program. So critically analyze the measures taken by government to boost the financial sector.
analyze the vision of अमृतकाल। या ऐसे भी क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं। What are the measures made for the rural sector development? And questions are asked, challenges of disinvestment and decentralization by the central government. Let us see a solution of a question in terms of disinvestment and decentralization. So disinvestment के क्वेश्चन में फर्स्ट ऑफ ऑल इंट्रोड्यूस द पार्ट वेरी वेल, डिफाइन कर दो आप व्हाट इज डिसइन्वेस्टमेंट, है ना, या हिस्टोरिकल अंडरपाइनिंग्स को आप कुछ लिख सकते हो। देन यू राइट डिसइन्वेस्टमेंट मेजर्स टेकन बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, sectors getting impacted. Now you use dimensions and subdimensions. Sector impacted by disinvestment, कौन कौन सेक्टर इम्पैक्ट हो रहे हैं? पब्लिक सेक्टर यूनिट्स के, इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर्स, बैंकिंग, एजुकेशन, and how it is impacting the private partners who are playing a key role. और ये क्या दिखा रहा है? Imparting profit based development. नाउ इसमें इंक्लूड कर सकते हो आप FCI का डिसेंट्रलाइजेशन, शुगर मिल्स, रेलवेज में डिसइन्वेस्टमेंट कैसे हुआ, डिफेंस सेक्टर में, सो FDI को कैसे बढ़ाया गया है, हाउ फॉरेन प्लेयर्स आर मेड की पार्टनर्स इन द गवर्नमेंट बॉडीज, एंड उनके कुछ फैक्ट्स आप ऐड करोगे, फिगर्स ऐड करोगे, मेक योर आंसर जस्टिफाइड, देन यू गो फॉर कंक्लूजन that how visionary move is disinvestment and up to what level disinvestment को किया जाना चाहिए, because public sector units की भी working aligned रहनी चाहिए. So I hope you understand this lecture very well. So ending this class, thank you and have a nice day. Jai Hind, Jai Bharat.